Where is the Phuket night market? You don't know? This is the night market? Sure? Are you sure? Thank you. गाड़ी से जगह पार्क कर दिए हैं, हेलमेट भी रख लिया अंदर। ये है फुकेट का नाइट मार्केट, छोटा सा है, लिखा है फुकेट मैरी मार्केट। बहुत सारे स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, आई थिंक स्ट्रीट फूड का मार्केट है। तरह तरह का बढ़िया चीज़ें हैं और मेरे आगे उस तरफ से गाना हो रहा है, बैंड। बात का टी शर्ट्स, वाह। काफ़ी टाइम बैठा, आधा घंटा करीब बैठा। अभी मैं जा रहा हूँ पतोंग बीच की ओर, जो बांग्ला रोड, जो काफ़ी फेमस है नाइट में। मेरी बाइक वहाँ पे पार्क किया हुआ है, बाइक ले लेता हूँ। और काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब गूगल मैप में मुझे दिखाया करीब 45 मिनट्स लगे के मुताबिक। देखते हैं अभी कब तक पहुँच पाते हैं। मेरा गाड़ी का नंबर ये है 5454। इस तरफ से आया था, तो अभी इस तरफ से मुझे एग्ज़िट होना है। मैं हेलमेट पहन के बैग लेके तैयार हूँ, अभी जाता हूँ बांग्ला रोड पतंग बीच की ओर।
और ये पहुंच गए हैं पतंग बीच के पास। रात का है, मौसम कुछ दिखेगा नहीं बीच, बट रोड तो काफ़ी शानदार है। हवा चलती है यार ये रोड में आने के बाद। मैं पटा गया था, पटा के बीच रोड में भी चला था, बट वहाँ पे उतनी हवा नहीं चल रही थी जितनी हवा यहाँ चलती है रोड में। अच्छा लगता है। पहुंच गया हूँ पतंग बीच की ओर। ये है पतंग बीच। आई थिंक न्यू बना हुआ है। पतंग बीच न्यू बना नहीं हुआ है, जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो न्यू बना हुआ है। करीब आधा घंटे से ऊपर लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। 40 मिनट गूगल मैप के हिसाब से तो सही है। यही है शायद बांग्ला रोड। बाप रे, भीड़ तो देखो यार, माँ कसम। पटाया में क्या भीड़ था, उससे ज़्यादा भीड़ तो यहाँ है। पूरे पब्लिक खड़े पड़े अभी से ही 9 बज रहे हैं, तो सोचो भीड़ रात को और क्या भीड़ हो सकता है। पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है फुकेट। पहले भी था बट और भी ज़्यादा होते जा रहा है फुकेट। अभी ना 7-Eleven से ना एक प्रोडक्ट लिया हूँ, चिकन बर्गर। तो उसी का भी यहाँ के साथ जगह देख